हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है क्लास में। आई एम अर्पिता शर्मा, योर एजुकेटर। आई होप आई एम ऑडिबल। आई होप मैं ऑडिबल हूँ, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। टुडेज क्लास इज ऑन द स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर जीएसएम 2 यूपीएससी सीएसई 2021-2022। तो आज की क्लास में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जीएसएम 2 के लिए। जीएसएम 2 मतलब जीएस पेपर 2 की स्ट्रैटेजी। How to handle, how to tackle this paper, how to prepare for this paper and what are the sources that we require to prepare for this paper. कौन से sources हैं जो हमें चाहिए इस पेपर को तैयार करने के लिए, वो सभी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, right? So stay hooked to the class to the very end, right? Because we are going to discuss the important resources that are so minute that you may miss them. So that is why it's necessary for all of you to stay till the end of the class to note down the important sources that you need to refer for your preparation. Okay, and also you can join Unacademy Plus for all these classes. आप इन classes के लिए Unacademy Plus को join कर सकते हैं and you will get very amazing discounts, 10% discount on your subscription if you use this code Sharma20. अगर आप ये कोड यूज करते हैं ना तो आपको इजीली 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस की क्लासेस पर। एंड देयर आर फ्री लेक्चर्स आल्सो नाउ अवेलेबल, राइट? अब फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल होने लगे हैं अनअकैडमी प्लस पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। All the entire subjects they are being taught by top educators free of cost for all of you. For example, best of Mrinal Patel sir. Free classes have been uploaded by Mrinal Patel sir in a series format on the subject of economy. Economy की special series Mrinal Patel sir ने launch करी है free of cost आप सभी के लिए, wherein he has covered all the important topics of economy for your prelims absolutely for free. आपके लिए पूरी तरीके से फ्री है ये सीरीज। लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। ऑल दीज 11 lectures which are covering all the most important topics on economy have been covered by India's top educator in economics, that is Mrinal Patel sir, right? So you can go through his lecture series. आप इनके lecture series के को देख सकते हो। All these lecture series you will be getting them free of cost. The link is given below in the description box. Description box में इन 11 lectures का link दिया हुआ है। So avail these lectures today, okay? चलो, let's start the class. We have discussed that GS paper 2 has 5 broad topics that you have to prepare. 5 broad topics हैं GS paper 2 के जो आपको prepare करने ही करने हैं, ठीक है? First is known as governance, second is known as international relations, Indian constitution, social sector development, Indian polity. These are the 5 subtopics of GS paper 2 that you need to prepare. And in these 5 subtopics, the topic of Indian constitution is very very important, ठीक है? Because as a citizen of India you are going to, and you are sitting as a administrator, as a future administrator while you are writing the paper. So as a future administrator you should know your constitution. If you don't know anything about your constitution then it will be very tough for you to administer. Constitution के बारे में knowledge नहीं होगी तो administration में दिक्कत आएगी, right? On the field you will face problems. How will you implement the government policies if you know nothing about fundamental rights, fundamental duties? If you have just crammed them, सिर्फ रट्टेबाजी लगाई है तो कैसे आप real field work में उसको implement कर पाओगे, right? So if you want to implement your knowledge, you should have analytical understanding of the Constitution of India. Basic understanding. What is the basic structure, doctrine, what are fundamental rights, fundamental duties, what is the meaning of justice, fraternity, secularism. Question on secularism came in 2019. 2019 में आ गया था question GS paper 1 secularism पे, which was a controversial question. But controversial question तो था, but you could have answered it, you can answer it very easily if you have the analytical understanding of the constitution. Okay, and the neutrality that is required एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ओके? तो एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, किसी के साथ इधर से उधर साइडिंग नहीं करनी है, किसी पार्टी के साथ साइडिंग नहीं करनी है, एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ सिटीजन्स का हित सामने रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू डू नॉट हैव टू स्टडी इट इन डेप्थ unless you have law optional or public administration as optional, because if you have law optional or public administration as optional then you have to go deeper into the constitution. But if these two subjects are not your optional then you have to study Indian constitution
with the basic structure, doctrine, fundamental rights, basic of the constitution you have to study. I will let you know the resources for that, don't worry. Okay, as we move forward forward, I will let you know the resources. Now governance is required while administering. अगर आप administrator बन रहे हो तो governance ही तो करनी है, right? You have to govern, right? You have to implement certain things in the society. Governance is required. International relations. What if you become an IFS, Indian Foreign Service Officer? क्या पता आप IFS चॉइस कर लो, right? सिलेक्ट कर लो, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. फॉर दैट यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. So that is also important. Indian polity, obviously you are going to become the Indian civil servant, right? You should have a very brief understanding of Indian polity, how the polity of India works, how governance politics works together, that you have to, and how you have to protect citizens interest in all this chaos. इस पूरे chaos में आपको citizen के interest को ही तो protect करना है. वो कैसे कर पाओगे जब इंडियन पॉलिटी की ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होगी. एंड सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, अगेन सोसाइटी फर्स्ट, सिटीजन्स फर्स्ट. यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, राइट, दस इंडिया, एंड इंडिया इज मेड अप ऑफ द सिटीजन्स. इंडिया किससे बना है? अपने सिटीजन से. नागरिकों के हित का आपको रिस्पेक्ट करनी है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है. गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इस प्रकार इंप्लीमेंट करना है कि वो हर एरिया तक पहुंचे, हर इंसान के घर तक पहुंचे, हर इंसान तक पहुंचे. यू हैव टू इंप्लीमेंट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज इन सच अ वे दैट इट शुड रीच मैक्सिमम पीपल, every sector, every area of this country, right? For that, social sector and development topic is also present. These are the 5 subtopics. Please let me know if this much is clear. Now moving forward, paper 2, GS paper 2, I have discussed that it comprises of Indian constitution, governance, issues and international relations. And it is very interesting because it is not static. You don't have to cram the old facts again and again. No, it is dynamic in nature. It is ever evolving, right? Because क्या होता है, अमेंडमेंट होती है, नए नए वर्डिक्ट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कितनी चीजें चेंज होती हैं 2 महीने के अंदर ही. Within 2 months everything changes. There are so many amendments. So it is ever evolving topic, so dynamic in nature that it keeps on changing, keeps on updating after every 1 month, after every 2 weeks, after every 3 weeks, right? सुप्रीम कोर्ट की कोई ना कोई वर्डिक्ट ऐसी आ जाती है कि चेंज हो जाता है, एक नया मजा आ जाता है कॉन्सेप्ट पढ़ने में. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट द लेटेस्ट टॉपिक विच इज गोइंग ऑन इन न्यूज, द स्टार कैंपेनर्स, right? How many of you have read that topic in the Hindu newspaper, star campaigner? Let me know in the comment section. Evolving, this is a very evolving paper, very dynamic nature paper, because star campaigner, election commission, model code of conduct, then the RPA act आ गया, ठीक है, and then the Supreme Court's verdict that election commission has no power to revoke the name of the star campaigner from the list. सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दी है कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो स्टार कैंपेनर का नाम कट कर दे. So all this is related to your GS paper 2. ये सारी बातें आपके पेपर 2 से ही तो रिलेटेड है, गवर्नेंस से ही तो रिलेटेड है, पॉलिटी से ही तो रिलेटेड है. What are the powers of election commission? This question can come whenever you are reading the newspaper. Make sure you are reading it from the perspective of exam, because when you are reading this news, some questions should come in your head. जब आप न्यूज पढ़ते हो ना, कैसे पढ़ते हैं न्यूज? पढ़ के छोड़ दिया ऐसे नहीं पढ़ते. Just you have to read the newspaper and that's it? No. You have to just copy paste, that's it? No. You have to read the newspaper and ask questions. That is known as analytical skills. इसी को तो analytical skills बोलते हैं. When you read and ask questions in your head, try to find the answers to those questions. This is called analytical ability. So when you are reading this news, make sure that you ask questions in your head. What are the powers of election commission? Right? What can election commission actually do? Secondly, also, what is this star campaigner? Can he be removed from the list? Who will remove him from the list? Right? ये star campaigner कौन होता है? इसको remove कर सकते हैं बीच पार्टीज अपनी लिस्ट से या नहीं कर सकते? Who will remove him? The parties can remove him. Party has the power to remove the star campaigner from the list. Okay? Then, how many star campaigners can a party elect? कितने स्टार कैंपेनर्स पार्टी यूज कर सकती है? सो इफ इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड पार्टी, दे कैन यूज 40 स्टार कैंपेनर्स. But if it is a non-recognized party but registered, that party can use 20 star campaigners. This is important fact for prelims. ये prelims का important fact है. So this is how you have to study a newspaper. इस तरीके से तो न्यूज़पेपर पढ़ना है. And if you study the newspaper like this in the 1 year of your preparation journey, trust me, GS paper 2 will become like butter.
इतना स्मूथ पेपर हो जाएगा, मक्खन बन जाएगा आपके लिए अगर आप इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। समझ आई बात? ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन, मेनी एस्पिरेंट्स दे मिस इंटरप्रेट द सिलेबस। इफ यू डोंट नो द सिलेबस यू विल कीप ऑन आस्किंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड कीप ऑन क्रैमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। सिलेबस की नॉलेज नहीं होगी ना तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे होगे, बट इफ यू नो द सिलेबस ट्रस्ट मी यू विल बी द वन विल बी क्रैकिंग दिस एग्जाम विद गुड मार्क्स, right? But for a beginner it is tough to understand the syllabus, that I understand. एक beginner के लिए syllabus को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, right? So that is why I am here to help you all in understanding the syllabus. मैं आपको help करने वाली हूँ कि syllabus को कैसे समझना है. Now first of all I would like to mention that UPSC is a little unpredictable when it comes to the pattern of question paper. UPSC syllabus को लेके unpredictable नहीं है. UPSC has formed a very fixed, definite, beautiful syllabus. But regarding the pattern of question paper means weightage given to each and every subtopic. UPSC is a little unpredictable. For example, if you judge UPSC's future question paper based on the last 10 years question paper, and if you think UPSC has given more weightage to fundamental rights, not to fundamental duties or DPSP, so I'll prepare fundamental rights only and I'll leave DPSP. मुझसे नहीं हो रहा तो मैं DPSP छोड़ दूंगा, fundamental rights prepare करके जाऊंगा. So UPSC in the next attempt can change the pattern by asking questions more from DPSP and less from fundamental rights. Okay, for example this year in prelims 2020 UPSC का पेपर देखोगे पूरा एग्रीकल्चर, पूरा फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड था. किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि फार्मिंग एक्टिविटीज, फार्मिंग सेक्टर, अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर इस पार्ट पे ज्यादा फोकस करेगा यूपीएससी, बट यूपीएससी ने किया, राइट? यूपीएससी कंप्लीटली चेंज्ड द पैटर्न दिस ईयर. कंप्लीट चेंज ऑफ पैटर्न वाज सीन. इट वाज most focused on agriculture than on the coronavirus issue, than on the CA amendment issue, राइट? सीए का कितना बड़ा हल्ला हुआ था 2019 में, बट यूपीएससी ने उसमें से कुछ भी नहीं पूछा. पूरा पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर पे था. सो दिस इज द यू कैन से quality of UPSC that it changes the pattern on a large scale. So you have to cover everything in an analytical approach. अब डरना मत, there is no need to get scared. You can cover everything if you are analytical. और अगर कॉलेज का दिमाग लगाओगे कि चलो ये टॉपिक पढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है? So here you have to understand the dynamicism of the question paper because since 2013 UPSC has focused on current affairs a lot. 2013 में बहुत बड़ा पैटर्न शिफ्ट हुआ था, करंट अफेयर्स पे फोकस करना शुरू कर दिया. एंड हाउ मेनी मंथ्स करंट अफेयर्स यू हैव टू प्रिपेयर? कितने महीने के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं? एटलीस्ट लास्ट 2 years करंट अफेयर्स. यूपीएससी हैज कंप्लीटली चेंज्ड इट्स पैटर्न. पूरा पैटर्न चेंज हो गया है. अब before 2013 UPSC used to focus on static portion, not on current affairs. But now looking at the dynamic change in the society, UPSC has turned itself towards the current affairs and last 2 years के current affairs are a must. वैसे तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि लास्ट 2 साल के ही पूछे, because many a times UPSC has asked question from 2002, 2001, but that is very few questions, 2 or 3 questions only, right? 2 या 3 question है, but you have to fix yourself till the last 2 years current affairs. Now if you have a backlog, मान लो आपका backlog है कि भाई करंट अफेयर्स का इतना, हमने तो अभी प्रिपरेशन शुरू की है, करंट अफेयर्स कैसे कवर करें? फ्रॉम योर एग्जाम डेट लास्ट 2 years करंट अफेयर्स यू हैव टू प्रिपेयर. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 तो आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने होंगे? जल्दी से बताओ. 2019 से Jan 2019 टिल योर एग्जाम टाइम. ओके, एंड प्रीलिम से कम 2 हफ्ते पहले न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देना. जस्ट लीव रीडिंग द न्यूज़पेपर 2 weeks बिफोर योर प्रीलिम्स. ओके, क्लियर? सो 2019 जैन से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं. फॉर द बैकलॉग्स विजन आईएएस की आपकी मंथली मैगजीन्स आती हैं, इनसाइट्स की, अनअकैडमी, आर्टिकुलेट, दीज आर द मंथली मैगजीन. एनी वन यू हैव टू सेलेक्ट. कोई एक मैगजीन पढ़नी है, नॉट ऑल, एनी वन. ओके, आई विल रिकमेंड विजन आईएएस पढ़ सकते हो, बट अनअकैडमी आर्टिकुलेट इज प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली. बाय बिकॉज इट हैज पिक्चर्स, क्योंकि विजुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत टाइम तक रहती है दिमाग में, राइट? सो यू कैन पिक अप एनी वन मैगजीन, कोई भी एक मैगजीन पिक करो एंड वीकली टारगेट्स बनाओ और करंट अफेयर्स को कवर करो. ठीक है? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ बिगिनर शुड डू, दैट इज देयर आर 2 most important things
And first is memorize all the aspect of the syllabus, and secondly go through 5 years question paper. There are students who are going through last 10 years and 8 years question paper. Pattern has been changed. Don't waste your time in going through 2000s year 2000 question paper, 1990 का question paper उठा लिया, waste of time. Okay, pattern has changed drastically. So go through only 5 years UPSC's mains question paper. Understand the syllabus. Understanding the syllabus means half battle is won. Secondly, go through the previous year question paper analytically. That from fundamental rights, what are the question UPSC is framing? Is the question analytical in nature or direct question? क्या fundamental rights से direct question आ रहा है कि इस article को explain करो, या घुमाकर आपको कोई केस देकर फिर critically analyze करो, ऐसा question आ रहा है? तो आपको दिमाग में समझ आ जाएगा कि जब मुझे टॉपिक पढ़ना है तो एनालाइज करके पढ़ना है. यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई हैव टू स्टडी अ टॉपिक आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम माय ओन सेल्फ, आई हैव टू सर्च द आंसर्स. दैट इज हाउ एनालिटिकल स्टडी इज डन. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द syllabus. Syllabus पे आ जाते हैं and book list. Okay, make sure that you are noting down this book list. Okay, so the first sub topic in GS paper 2 is Indian Constitution. ये आपका पहला सब टॉपिक है. In Indian Constitution you have to study historical underpinnings, that is the Company Rule, Regulating Act, Charter Act, Crown Rule, Indian Council Act, Indian Independence Act, etc. Okay, then the subtopic is evolution, that after independence how did the constitution evolved. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ ये पढ़ना है आपको. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फोर्समेंट एटसेट्रा. Then you have to study the basic structure doctrine of Indian Constitution. That is a separate chapter in M. Lakshmikant book. I'll tell you the name of the books that you have to study. Okay. So in the basic structure doctrine, you have to study Keshavananda Bharati case, the most famous case. Important Supreme Court judgments of last 1 year. Last 1 year की important Supreme Court की judgments पढ़नी है. Features of the Constitution, that is also a separate chapter. Now देखो, Indian Constitution के तो करोड़ों features है. There are 100 plus features. You don't have to study 100 plus features. You just have to study 8 or 9 features, right? Because Indian Constitution is very vast and you are not a law student. आप lawyer तो बन नहीं रहे हो या जज का एग्जाम तो दे नहीं रहे, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो. सो इन यूपीएससी's examination you have to focus on the last 5 years question paper. You have to identify what are the features that UPSC is again repeatedly asking questions on. कौन से features है जिसपे UPSC बार बार question पूछता है, and you have to identify those features and study. But इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. There is no need to put in that much amount of effort also. Why? Because in the M. Lakshmikant book, right, in the latest edition, there is a separate chapter on features of the Constitution, and it is also mentioned in the NCERT of class 12th and class 11, or not 12th, class 11th. ओके, तो ये तो अगर किताबें पढ़ ली तो आपको अलग से कहीं छानबीन करने की जरूरत नहीं है. These 2 books you have studied, no need to go on any other platform. And then amendments, the most famous amendments are 42nd amendment, 44th amendment, 25th amendment etc. 96th amendment. तो ये आपको amendments different पढ़नी है. That is also included in M. Lakshmikant. ये भी M. Lakshmikant पे included है. No need to search here and there. And certain significant provisions like environmental rights, fundamental rights, DPSPs, etc. Now to cover all this, which resource do you require? ये सब cover करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? One book is required to cover all this, and that is M. Lakshmikant. आपको एक किताब पढ़नी है ये सब कवर करने के लिए. Only one book is sufficient. M. Lakshmikant, the latest edition, 6th edition है I guess, right? Latest edition लेना है आपको. You have to purchase the latest edition of M. Lakshmikant. Okay, इतनी बात सबको समझ आ गई. So you have to make, and plus you have to study the newspaper regularly, because without reading the newspaper, how will you know about the different amendments, different provisions that Supreme Court is passing? For that, daily the Hindu newspaper or the Indian Express, any one newspaper you have to study dedicatedly, sincerely. सुबह उठते ही पहला काम newspaper पढ़ना होना चाहिए. When you wake up, the first thing that you should do is not check out your phone, right? Or not gossip with your parents or your relatives or your friends or your cousins. No. First, pick up the newspaper, read it. Make it a habit. ऐसी strong habit बना लो कि उठते ही मुझे newspaper चाहिए.
And if you're not getting the physical delivery of the newspaper in your area, then there are so many telegram channels providing you free PDFs of the Hindu newspaper. कितने सारे telegram channel है जो आपको free newspaper का PDF provide करते हैं. For example, my telegram channel, I am also providing newspaper PDF, right? So you can go through the newspaper PDF. Online पढ़ रहे हो तो online पढ़ो, physical newspaper पढ़ रहे हो hard copy तो hard copy पढ़ो, ठीक है? But study the newspaper and highlight the टॉपिक्स दैट आर इन न्यूज रिलेटेड टू जीएस पेपर 2. पेपर 2 से रिलेटेड जो भी टॉपिक न्यूज में हाईलाइट करो, समझो और नोट बनाओ, ठीक है? क्लियर? सो कॉम्प्लीमेंट योर एम लक्ष्मीकांत विद न्यूज़पेपर डेली. एंड सेकेंडली, एनसीईआरटी के बिना एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट मत करना. डू नॉट स्टार्ट रीडिंग द एम लक्ष्मीकांत बुक विदाउट फर्स्ट कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी. सो विच एनसीईआरटी यू हैव टू स्टडी? कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? नाउ एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th and 12th. Okay, there are total 4 NCERT, 2 NCERTs of class 11, 2 of class 12. Total बस 4 NCERT हैं. And these NCERTs are so concise कि you can cover them within 3 weeks. 3 हफ्तों में आराम से very easily you can cover at least 2 readings or at least 1 reading you can easily cover within 3 weeks. 3 हफ्तों में एक reading तो आराम से cover कर सकते हो, 2 reading भी cover कर सकते हो, right? So I will recommend first start with the NCERTs, cover them thoroughly, do not cram them, रटना मत, and there is no need to make notes from the NCERT. NCERT itself is in self-explanatory mode, ठीक है? अपने आप में ही self-explanatory mode में होती है NCERT. notes मत बनाना, just highlight the important points in the book itself. Okay? समझ आ गई बात सबको? Then jump on to the M. Lakshmikant book. For example, you have studied Fundamental Rights chapter today in NCERT. Okay? You can also complement that chapter with M. Lakshmikant. You have completed Fundamental Rights chapter from NCERT. Now you can open a Fundamental Rights chapter tomorrow from M. Lakshmikant and study it further. तो एक ही दिन में आपका एक ही बारी में पॉलिटी और NCERT, लक्ष्मीकांत और NCERT कवर होती चली जाएगी. Simultaneously, you will be in a position to cover both the topics from both the books. Okay? Clear? इतनी बात सबको समझ आ गई? Please let me know if this much is clear. आगे बढ़ते हैं. Now, what are the points that you should focus on in this paper? See, these topics ना, they may seem factual to you, static to you. कि चलो ये historical underpinnings, first, I guess first chapter of M. Lakshmikant, it is all about historical underpinnings. तो आपका Indian Constitution का ये part तो पहले chapter में ही cover हो जाएगा. This part of, the historical underpinnings of Indian Constitution, you can cover it very nicely through M. Lakshmikant, the chapter number 1. Right? Then there is a separate chapter on amendments in M. Lakshmikant, separate chapters on features, basic structure, significant provisions. All this will be covered through M. Lakshmikant first few chapters. ठीक है? इतनी बात समझ आ गई सबको? आगे बढ़ते हैं. Now, what are the important points to focus? We all know that chapters are static, a little bit static. देखो, historical underpinnings, it is static, it is not dynamic. Evolution of constitution, not dynamic. Basic structure, not very dynamic. Okay? Amendments, not very dynamic, right? So all these are static. But how can you link these topics to your current affairs? How can you make it dynamic? Whenever you are studying amendments or whenever you are studying Keshavananda Bharati case, the Supreme Court verdict in this case which was passed, how it is applied today in today's time, that means dynamism. Okay, इसको हम डायनामिज्म बोलते हैं कि जो आपने केशवानंद भारती केस पढ़ा या आपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ा, ये आज के टाइम में कैसे एप्लीकेबल है, इसको अगर दिमाग में रख के पढ़ोगे तो टॉपिक डायनामिक बन जाएगा. When you study a topic keeping in mind what is happening currently in the country, that is linking it with the current affairs, the topic actually becomes dynamic in nature, right? अपने आप ही केक वॉक हो जाता है. मान लो मैं आपको थ्योरी पढ़ाती जाऊं और कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना बताऊं तो बोर हो जाओगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम दैट आई एम जस्ट टीचिंग यू थ्योरी एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू अप्लाई इट इन practical. ठीक है? I'm not teaching you anything in practical, but I'm just explaining you the theory. You will get bored at some point of time. But if I start linking the theory with practical, मैं आपको actually आज के current environment में कैसे चीजें चल रही है उससे theory को relate करके समझाऊं, it will become interesting, right? So that is how you have to study whenever you are reading a chapter. For example, in M. Lakshmikant, you are reading a chapter on, let's say, fundamental rights, and article 21 you are studying today. Okay? So link that article with what is happening right now. How can you use that article in current cases, current scenarios? ठीक है? Link it with that and then study.
इतनी बात समझ आ गई? सो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट बिकॉज इट हेल्प्स यू टू build up interest in studying polity. What kind of questions they are asking? In 2013, the question was discuss the section 66A of IT Act. 66A. It was in news in the month of February 2020. ये Feb 2020 में न्यूज में था, ठीक है? So this is how you have to link. This is how UPSC is linking static topics with current affairs. Discuss this section with reference to its alleged violation of Article 19 of the Constitution. So UPSC is also not asking direct questions in polity. आपसे ये नहीं पूछा कि explain Article 19. No, they did not ask explain Section 66A. No, they have linked together Section 66A and the violation of Article 19 and framed a question because it was in news at that time. उस टाइम पर Article 19 का violation हुआ था, जिस वजह से ये question news में आया. So whatever current happenings are going around you, you have to link it with the static topic that you are studying in M. Lakshmikant, and this is how you can frame answers. Now many students, they have this doubt how to write answers in mains. Why do they have this doubt? Because they have no hold or no understanding of the current affairs. Current affairs की जब तक understanding नहीं होगी, hold नहीं होगा, तब तक आप लिखना नहीं समझ पाओगे. और जब current affairs की understanding build up होने लगेगी, लिखना अपने आप आता जाएगा. Okay. Similarly, in 2014, the question was, what do you understand by the concept freedom of speech and expression? Okay, this is the direct question, but they have linked it with the current affairs. Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on slightly different plane from other forms of expression discussed? Padmavat movie आई थी ना? All of you must remember that movie, right? Padmavat, सबको याद? There was such a huge controversy on those movies, right? Third Battle of Panipat and then Padmavat movie, right? So you have to link those controversies with the static topic that you are studying, freedom of speech and expression. It is related to this, okay? So these questions, जब भी movies के ऊपर बवाल होता है, for example, right now there is a chaos going on the movie Lakshmi Bomb. The bomb word has been eliminated now from the title and only Lakshmi word has been kept, okay? समझ आई बात सबको? Why? Because people were alleging that bomb word is a derogatory word and it is insulting our Hindu goddess Lakshmi. हमारी हिंदू गॉडेस जो लक्ष्मी माता है उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है बॉम्ब वर्ड लगाकर. That is why that word has been removed now. All these controversies ना, they are related to this topic, freedom of speech and expression. Okay? अब समझ आ रहा है कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है? Now you understood? चलो, let's move forward. So for the books that you have to refer is Lakshmikant, the latest edition, and some students, they study the D.D. Basu book also. However, I will not recommend you. D.D. Basu only those students have to study who have law optional. जिनके पास लॉ ऑप्शनल है ना, उनको डीडी बासु पढ़नी चाहिए. इफ यू डू नॉट हैव लॉ ऑप्शनल, देन देयर इज नो नीड टू स्टडी डीडी बासु. एंड इफ यू हैव डीडी बासु, you have purchased it, then the first 4 chapters you can study. This will also, give you a good insight on the Indian Constitution. अगर मान लो आपके पास है, by chance you have the DD Basu book, then you can study the first 4 chapters, but do not purchase it if you don't have law optional. ठीक है? So लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है? You have to study, and NCERT polity books class 9, 10th and 11th you have to study. Now you can skip 9th, 10th book. 9th, 10th very journal NCERT है, उसमें टाइम वेस्ट है. But 11th and 12th ये आपको पढ़नी पढ़नी. You can skip 9th and 10th because it's everything is covered in 11th, 12th NCERT. 9th, 10th के बारे में सब कुछ यहाँ covered है. So you can ignore 9th, 10th NCERT of polity. 11th and 12th class NCERT. Right? It's a must for you. Without completing these 2 books, do not jump on to the M. Lakshmikant. Or you can supplement them with M. Lakshmikant. M. Lakshmikant के साथ साथ simultaneous study you can give them. But इसको last में मत रखना. Because why am I saying that? Because 10 questions every year, हर साल prelims में 10 question बन रहे हैं 11, 12 की NCERT से since the last 10 years. पिछले 10 साल से NCERT से 10 question आते ही आते हैं. And students, they ignore NCERT every year. There are majority students who are ignoring NCERT except the rankers जो clear करते हैं. Majority बच्चे, they think that we have studied M. Lakshmikant, that is enough. इतनी heavy book पढ़ ली काफी है, सब cover हो गया. No, that is not enough. In NCERT the language is different, the interpretation is different, the analytical understanding is different.
Okay, and it's easy. M. Lakshmikant makes things little complicated. You have to cram it actually. But in NCERT, everything is written in a very simplistic manner, very analytical manner. So please, if you want to score 20 marks, अगर 20 नंबर तो आप full fledged you want to grab them in prelims, then study 11th 12th NCERT of polity. ठीक है, there are 4 books, you can cover them within 3 weeks. 4 books है, 3 हफ्ते में आराम से कवर होंगे. And if you are a sincere student, in 2 weeks you will be able to finish them. अगर बहुत dedicated student हो ना तो 2 हफ्ते में तो cover कर ही लोगे. It's written in such a simple language. Okay, clear? आगे बढ़ते हैं. Now moving on to the next resource. Next resource में आते हैं. ठीक है. Now for getting your basics right, ठीक है, जब आपको अपने बेसिक्स राइट करने हैं, डीडी बासु पढ़ सकते हो, बट आई विल रिकमेंड इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत. ओके, एंड इन दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन दिस बुक विच यू कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज फ्रॉम दीज बुक चैप्टर्स यूपीएससी इज डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस एवरी ईयर, आर चैप्टर 12, 13, 14, 30 एंड 31. ये जो चैप्टर्स है ना, इसमें से डायरेक्टली हर साल क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर इन प्रीलिम्स. Chapter 12, 13, 14, 30 and 31. Mark it right now in your book. Agar if you have M. Lakshmikant na, open it up and mark it. If you do not have M. Lakshmikant, just write it on a piece of paper. That I will not skip these chapters. You have to study the book, but I will not skip these chapters. मैं इनको तो छोड़ूंगा नहीं किसी हालत में. ठीक है? And ARC, जो आपकी सेकेंड ARC रिपोर्ट है, उसके अंदर 13th रिपोर्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट यू हैव टू स्टडी. राइट, तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देयर इज अ कमिटी आल्सो. ओके, ARC करके कमिटी है, एंड देयर आर फ्री रिपोर्ट्स दैट इट इज पब्लिशिंग ऑनलाइन. यू विल गेट द PDF फॉर फ्री ऑनलाइन. आप टाइप करोगे, जस्ट टाइप ARC2 13th रिपोर्ट एंड यू विल गेट द PDF. यू हैव टू स्टडी दैट PDF. ठीक है, बट इफ यू डू नॉट हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू कैन नॉट गो थ्रू द होल रिपोर्ट, देन देयर आर समरीज आल्सो विच आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑनलाइन. फ्री समरी भी अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू द समरी, बट प्लीज दिस रिपोर्ट इज मस्ट. इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो, लिख लो, जस्ट राइट इट डाउन. ओके, ARC2 13th रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स कैसे फंक्शन करता है, इस पे एक समरी रिपोर्ट है, वो पढ़ना जरूर. ओके, एंड द ARC2 6th रिपोर्ट ऑन लोकल गवर्नेंस, दिस इज अ मस्ट, बिकॉज राइट नाउ लोकल गवर्नेंस इज boost, they are giving boost to the local governance, panchayati raj institution, municipal corporation. There is separate chapter in M. Lakshmikant book also, I guess chapter 16 and 17 or 32 33. okay, या तो 16-17 या लेटेस्ट एडिशन में 32-33. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ऑन दैट, ऑन लोकल गवर्नेंस, देयर इज ARC2 6th रिपोर्ट, दैट यू हैव टू स्टडी, दैट इज अ मस्ट. ये तो मस्ट है. ठीक है, सो दिस रिपोर्ट अगेन इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, दिया हुआ है. ठीक है, चलो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. नाउ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक, इसके लिए मैंने आपको बता दिया M. Lakshmikant, you have to study. For this you have to study the M. Lakshmikant book. Okay, then topic 2 is functions and responsibilities of union and states, issues and challenges. For that, second ARC, the report is 13th report, organizational structure of government, that you have to study. The summary report, if you don't have time, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो summary report पढ़ सकते हो आप. ठीक है, and in M. Lakshmikant, chapter 12, 13, 14 and 30. These chapters will cover your topic 2 of GSM2. GSM2 में जो function and responsibility है ना यूनियन एंड स्टेट्स की, वो आपके इन चैप्टर्स में easily covered है. That is covered easily in this chapter and this 13th report of second ARC. This is a must. ठीक है, this much is clear. So moving forward, the topic 3 is separation of powers between various organs. These topics are in GS paper 2. ठीक है, ये सब topics है. Separation of powers between various organs, dispute redressal mechanism and institution. This is the subtopic. Now for that you have to prepare from 7th report of second ARC. The name of the report is capacity building for conflict resolution. Whenever there is any conflict between the department, right, or ministries, how it is resolved, कैसे वो resolve किया जाता है, how it is solved, what is a conflict resolution mechanism,
right? How the government builds capacity in the ministries, in the departments, that is explained in this 7th report of second ARC. ये आपको पढ़ना है, ठीक है? So what is left wing extremism? ये जो आप टॉपिक्स न्यूज़पेपर में देखते हो ना, the topics in newspaper, SC/ST issues or the left wing extremism, regional disparities, land and water related issues, all these are covered in this report, ठीक है? So in this topic 7th report is very important, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है. Later these topics are also covered in लक्ष्मीकांत. M लक्ष्मीकांत की किताब में ना ये topics covered हैं. For example, left wing extremism, that is also covered. Land and water related issues, interstate issues, chapter में covered है, right? Federal governance, everything is covered in M Lakshmikant, and 7th report you have to study, that is a must. Now coming towards topic number 4. अब हम आते हैं topic 4 पर. Here the topic 4 is comparison of Indian constitutional scheme with other countries. हमारा constitution उसको compare करना है और countries के constitution से, ठीक है? For that I will recommend S चांद. मैं आपको S चांद recommend करूंगी. The book is Select Constitutions of the World. This is the book that I will recommend to you, ठीक है? Now in this book our constitution has been comparatively analyzed with the other constitutions. हमारे constitution की working को, feature को बाकी के constitutions, Canada's constitution, America's constitution, इन सभी के constitution से compare किया गया है, South Africa's constitution etc. So question on that can be asked because right now India and Australia are in news. They are highlighted in news. ठीक है? तो अभी फाइनली क्या हो रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है? Why? Because we are entering into some agreements with Australia, right? That is why our relationship is in news. Okay? हमारा relationship ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूज में है, प्लस मालाबार एक्सरसाइज, right? Australia is participating. So question can come on comparing the constitution of India with Australia. You have to be prepared for that. So moving forward, topic 5 is parliament and state legislature, ठीक है? Now here is topic 5, parliament and state legislature. इसके अंदर you have to study the structure of parliament, functioning of parliament, parliamentary standing committees, all of them are always in news. अभी इसी week parliamentary standing committees news में थी. In this week only the PSCs were in news. So question can be framed on parliamentary standing committees. What are they? What are their roles and responsibilities? Okay. For that you have to refer to newspapers daily. Daily note making तो करनी ही करनी है, ठीक है? Make sure that you are reading the newspapers daily and you are not missing even the newspaper even for a single day. एक दिन के लिए भी मिस मत करना. If by chance you missed it, try to cover it on weekends. अगर मान लो आप हफ्ते में 3 दिन न्यूज़पेपर मिस कर दिया, वीकेंड्स पे कवर कर लेना, but don't leave it as it is. Okay? Clear? And सुभाष कश्यप्स आर्ट पार्लियामेंट, ये जो किताब है, it is going to be a wonder book for all of you when it comes to understanding the parliament. But if you cannot afford this book, there are many students who cannot afford so many books, or there are many students who do not go into buying all these books. You can also rely on M Lakshmikant, ठीक है? तो अगर आपको ये किताब नहीं खरीदनी, there is no pressure on you to buy this book. No, I am just recommending it because it is very elaborate in nature, very wonderfully it has mentioned parliament, the structure of parliament, functioning etc. But if you don't want to purchase this book, no issues. You can also study Lakshmikant, M Lakshmikant. There is a separate chapter on parliament in that book. उस बुक में पार्लियामेंट के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है. प्लस you can link it with the current affairs. जो भी न्यूज में चल रहा है पार्लियामेंट के ऊपर, 0 hour, right, cut motion etc. All these points in current affairs, link it with the chapter of parliament and study. Prepare your notes. Okay? No need to purchase this book compulsorily. This is just my recommendation. नहीं माननी है, नहीं मान सकते हो. आप एम लक्ष्मीकांत से भी कवर कर सकते हो. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप यही किताब लेनी है, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई सबको? This much is clear? Okay. Moving forward, topic number 6 is structure, organization and functioning of executive and judiciary. Again, M Lakshmikant. इसके लिए भी M Lakshmikant is enough because there are separate chapters on parliament, supreme court, state legislature, pressure groups, local government, high court, subordinate courts. Separate chapters है M Lakshmikant में. Again for these chapters जो कि topic 6 में है, all these chapters are covered in M Lakshmikant latest edition. Okay? ठीक है? इतनी बात सबको समझ आ गई? So far what are the books that we have studied? What are the books that we need to study from the GS paper 2? M Lakshmikant and NCERTs and current affairs. ये 3 sources हमने अभी तक पिक किए हैं, ठीक है? आगे बढ़े.
Now, and the ARC reports. Okay. टॉपिक 7 इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. ये है आपका टॉपिक 7. इसको तो आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम एनी वेबसाइट. ओके, इसको तो आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते. दिस इज वन सिंगल एक्ट. यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम IAS बाबा वेबसाइट, या तो आप IAS बाबा वेबसाइट से प्रिपेयर करो. और इट इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. इनसाइट्स ने इसको राज्यसभा टीवी के हाईलाइट्स में से एक्सप्लेन किया है. The RSTV highlights, Insights has taken that and explained RPA. Wonderfully explained. Go on Insights and just study about RPA. Insights पे जाओ वेबसाइट पे, वहां RPA के ऊपर पूरा ब्रीफ में with question and answers everything is given. Study that. Okay? Clear? And for topic 8 and 9 which is constitutional post, powers, functions, responsibilities, ये टॉपिक आपका कवर है लक्ष्मीकांत में in these parts. इस किताब के 7th, 8th and 9th पार्ट में इन द यूनिट M Lakshmikant, in unit 7, 8 and 9 this topic is covered. So far what are the resources that we have covered? You have to study the ARC report 7th, 13th and 6th report. Okay, second ARC की. Then you have to study NCERT class 11, 12 Pol Science. 4 books are there and M Lakshmikant. ठीक है, समझ आ गई बात. Topic 10 is government policies, interventions, government schemes. Again you can cover them from newspapers. इसके लिए तो the only source is newspapers only. इसका तो only source है newspaper. And do not study the Hindustan Times or Times of India, please. Right? I'm requesting you. ये बेकार के newspaper पढ़ना छोड़ दो. There are many students who are studying Hindustan Times. There is nothing in that newspaper for UPSC. You have to study either the Hindu or the Indian Express newspaper. Either of one. Them. कोई भी एक newspaper पढ़ना है. Any one of them. Not two. ये दोनों नहीं पढ़ने हैं. टाइम वेस्ट करने बैठ जाओ कहीं पूरा दिन. राइट, ओनली वन न्यूज़पेपर एंड रेगुलरली विजिट द PIB साइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. ओके, क्लियर? ओके, so for this PIB, press information bureau, this website regularly you have to check it because it is government's official website. Newspaper, the Hindu or the Indian Express, and economic survey is a must. हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आता है ना, प्रिपेयर करना, उसको भूलना मत. ठीक है. So all these topics, welfare schemes, government policies will be covered from the newspaper itself. Okay. Now coming on governance, transparency, accountability, e-governance. Again for this second ARC report on promoting e-governance. Okay. Now coming on to topic 13. For topic 13, second ARC report, 10th report, refurbishing of personal administration, that you have to study. इस रिपोर्ट के अंदर स्पेशली चैप्टर 4 आपको पढ़ना है. इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया गया है. टॉपिक 13 इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. सो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी सेकंड ARC's 10th रिपोर्ट. ये आपको रिपोर्ट मस्ट है, पढ़नी ही पढ़नी है. ठीक है. फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, MEA वेबसाइट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट. ठीक है, ये वेबसाइट मस्ट है. विजिट दिस वेबसाइट डेली. ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग. आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ बुक आपको नोट्स बनाने हैं. एंड इफ यू वांट टू डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इफ यू हैव PSIR ऑप्शनल, अगर आपका ऑप्शनल है पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, देन आई विल रिकमेंड यू टू परचेज दिस बुक, राजीव सीकरी, चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी, रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. Okay, so if you have PSIR optional, then you have to purchase this book by Rajiv Sikri. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई. चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी, रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये किताब बहुत जरूरी है अगर आपके पास PSIR ऑप्शनल है. इफ यू डोंट हैव दिस ऑप्शनल, देन विजिट MEA वेबसाइट एंड द न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड दैट इज इनफ. ओके, इतनी बात समझ आ गई. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन, रिविजन, रिविजन. Right? Nothing is going to, nobody is going to help you if you just cram or read things and keep it on side and you are not revising. Nobody can help you then. अगर आप पढ़ पढ़ के चीजों को इकट्ठा करके रखते जा रहे हो, नोट्स बना बना के रख दिए, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी. But if you are making notes and revising again and again on weekends, then you are going to be your own savior. आप खुद की हेल्प कर सकते हो, खुद को खुद के लिए इजी बना सकते हो चीजों को, अगर आप पढ़ रहे हो और साइड बाय साइड रिवाइज कर रहे हो. ठीक है. सो दिस वाज आवर GSM 2 स्ट्रैटेजी. ये थी हमारी GSM पेपर 2 की स्ट्रैटेजी. आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास. राइट. सो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सही लगी हो तो आप इसको फॉलो करना आज से शुरू कर दो. जस्ट स्टार्ट टू फॉलो द स्ट्रैटेजी इफ यू फाइंड इट यूजफुल. एंड ऑल्सो
make sure that you are revising and you are keeping your resources limited. So far we have just studied 5 books. M Lakshmikant is required, then NCERT 4 NCERT is required है 11th 12th की, 2 from 11th class, 2 from 12th class. ठीक है. So I'll be taking this preparation strategy series. Tomorrow from 4 to 5 p.m. I am going to take a class on important government schemes. कल 4 से 5 बजे 1 hour class important government series part 1. Do attend that class. It is also important for your GSM 2 preparation. Okay, clear? So we are going to meet tomorrow in the Unacademy special class, free class. Okay. On that note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.